Well, friends, now I want to start the exercise. Exercise 1.2. And you already know, friend, what is 1.1. These things you already know. Yesterday explained by me to you what is 1.1 function. Means, friends, yesterday explained by me to you 1.1 function. What is 1.1 function? Means, friend, you can take two arbitrary elements. Let x1 comma x2 belongs to A and spends f of x1 is equal to f of x2 after solving. If x1 is equal to x2 coming, it means you can say f is 1 1. Without any hesitation, you can say f is 1 1. And the second name स्टूडेंट you can say इंजेक्टिव also. तो इंजेक्टिव के केस में क्या होता है कि ये फंक्शन 1 1 है या 1 1 नहीं है, सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है. आफ्टर दिस स्टूडेंट यू शुड चेक इंजेक्टिविटी. तो टू चेक इंजेक्टिविटी ऑल ऑफ यू कैन राइट स्टूडेंट केयरफुली, यू कैन सिंप्लीफाई. ओके, देखिए इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है टू चेक ऑन टू और यू कैन से सबजेक्शन. तो मैंने आपको पहले ही बताया था इफ यू वांट टू चेक सबजेक्शन तो हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है लेट f of x is equal to y and you after solving you can find the value of x in terms of y. Again I'm repeating, whenever injectivity you want to check, then very simple, you can take two arbitrary elements in the domain and after this you can write f of x1 is equal to f of x2 after solving. If x1 is equal to x2 coming, it means you can say 1 1 function. If you want to check surjection, then very simple, you can write f of x is equal to y and you can find, after solving, you can find the value of x in terms of y. If this belongs to domain, you know, this belongs to A, it means you can say f is onto, you can say f is onto or surjection. Again I am repeating student, if you want to say any function is bijective, so I want to tell you student one more time, if any function is 1 1 and onto both, then you can say, you know, that given function is, you know, bijective. Whenever any function is 1 1 and onto, then you can say bijective. One more thing is meant, मैं आपको एक एग्जांपल से ही बताना चाह रहा हूं. जैसे कि सपोज ये मैंने कल भी बताया था, दिस गिवन a एंड दिस इज गिवन हियर b और आपका फंक्शन क्या है, योर फंक्शन इज हियर f such that a tends to b. I am giving only one example. Here 1 given, 2, 3, 4 and here given 1, 2, 3, 4 and 5. The image of 1 is 1, the image of 2 is 2, the image of 3 is 3 and the image of 4 is 4 under f. So in this case, you know what is happening here? You already know distinct elements in the domain having distinct images in the codomain so that the given function is, you know, 1 1. Now here please check in the domain, in the codomain 1 2 3 4 5. देखिए इस 1 की प्री इमेज है, इस 2 की भी प्री इमेज है, इस 3 की भी प्री इमेज है और इस 4 की भी प्री इमेज है, but this 5 having no pre image, therefore it is not onto. In this situation it is called onto into. अब ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 into. अगर कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है, इसका मतलब मैंने कल ही कहा था आपसे कि इफ एनी फंक्शन इज नॉट 1 1 इट मींस मेनी 1. और अगर ये इनटू है तो फिर onto क्या होगा, onto का मतलब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर सपोज ये 5 यहां से हटा दिया जाए, अब क्या है यहाँ पर, नाउ स्टूडेंट यू कैन चेक all the distinct elements in the domain having distinct images in the codomain, therefore 1 1 and all the elements in the codomain, ये आपका पूरा codomain है, all the elements in the codomain having preimage in the domain, therefore you can say onto.
अब आप दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जब भी आपके किसी भी फंक्शन में रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन, देन यू कैन से सर्जेक्टिव। अब देखिए इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है। नाउ आई वांट टू स्टार्ट इसमें एक्सरसाइज 1.2। एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज आई वांट टू टेल यू basic things related to that exercise. Now I want to start here student exercise 1.2 and question number 1 here. You can check in NCERT what is given. देखिए NCERT में आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, सॉरी 1.2, तो आई हैव, देखिए ये न्यू बुक है हमारे पास में और इसमें 30% सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। एनसीईआरटी देख सकते हैं आप। देखिए इन दिस बुक व्हाट इज गिवन, आप देखिएगा इन दिस बुक गिवन शो दैट द फंक्शन f says that r asterisk tends to r asterisk defined by f of x is equal to 1 upon x is 1 and on 2. Again I'm repeating, please take question here, exercise 1.2. Show that the function f says that r asterisk tends to r asterisk. Here r asterisk what is given? देखिए वैसे तो r क्या होता है, रियल नंबर होता है, और यहां पर क्या गिवन है, f such that r asterisk tends to r asterisk and here f of x is equal to 1 upon x. You want to prove here, you want to prove here the given function is 1 1 and on 2. देखिए ये r asterisk क्यों लिखा है, वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चंस में r होता है। r का मतलब क्या होता है, r मींस रियल नंबर, रियल नंबर मींस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो फंक्शन है f of x is equal to 1 upon x, अगर आपने माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिया तो बीच में जीरो भी आ रहा है, तो इफ यू विल टेक द वैल्यू ऑफ f0 देन 1 upon 0 विल कम, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहां पर इस क्वेश्चन में केवल स्पेशली f such that r asterisk tends to r asterisk given, और यहां पर r asterisk क्यों लिखा है, here r asterisk means non-zero real numbers. Non-zero real numbers means स्टूडेंट्स r asterisk का सीधा सीधा मतलब है कि आप ये समझ जाइएगा r डिफरेंस जीरो, सारे रियल नंबर्स होंगे किसको छोड़कर, ओनली जीरो एक्सेप्ट जीरो। r डिफरेंस जीरो, दुनिया की सारी वैल्यूज होंगी, सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट जीरो, इसीलिए इस क्वेश्चन में एस्टेरिस्क बना हुआ है। आफ्टर दिस प्रिंट यू कैन राइट हियर टू चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट टू चेक ऑन टू। तो ऑन टू के केस में, सॉरी पहले हमें 1 1 चेक करना है क्योंकि हम इंजेक्टिविटी चेक करेंगे। टू चेक 1 1, तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, यू कैन राइट हियर स्टूडेंट लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r asterisk। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है द गिवन फंक्शन इज 1 1 and on 2, तो हमने सबसे पहले क्या किया, you can take two arbitrary elements x1 and x2 belongs to domain, domain is here r asterisk. After this statement what will write here, f of x1 is equal to f of x2, you already know f of x 1 upon x, therefore f of x1 1 upon x1 is equal to 1 upon x2. After solving x1 is equal to x2, finally what will write here student, since f of x1 is equal to f of x2, this implies x1 is equal to x2, therefore f is, you can write here students 1 1 without any hesitation, you can write in this way. ये किसमें है बेटा 1 1, ये r asterisk में है, means for non-zero real numbers. And after this point you can check टू चेक ऑन टू, दोनों ही आपको चेक करना है। टू चेक ऑन टू को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू शुड राइट हियर लेट f of x is equal to by, what is the value of f of x, 1 upon x is equal to by, after solving x is equal to 1 upon by, this also belongs to student r asterisk, please try to understand. To check surjectivity, in all cases you should write first of all f of x is equal to by, and f of x is 1 upon x,
इज इक्वल टू बाई, मैंने पहले ही कहा था आपसे, यू शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ x in terms of x is equal to 1 upon by. This also belongs to R asterisk, means non-zero real number. Therefore, you can write here f is on 2. f कैसा हो गया? on 2. अब यहां पर आप खुद ही देखिएगा, f is 1 1 and f is on 2. यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था. अब देखिए आपकी बुक में सेकेंड पार्ट व्हाट इज गिवन. सेकेंड पार्ट इन दिस बुक गिवन is the reality is true. देखिए what is given, is the reality is true if the domain R asterisk replaced by a natural number. अगर इस R asterisk को आप नेचुरल नंबर से रिप्लेस करें तो क्या रियल ट्रू होगा स्टूडेंट्स? अगेन आई एम टेलिंग यू, देन रियलिटी इज नॉट ट्रू, बिकॉज देखिए इफ वी replace domain, if we replace domain R asterisk with natural number n, then what will happen? This means 2 belongs to a natural number, and you know what will be value of f2? f2 is equal to, you know what will come here? 1 upon 2. This does not belong to natural number. देखिए अगर R asterisk है तब तो ये 1 1 भी था और on 2 भी था. If you will replace domain of this function R asterisk with natural number, then what will happen? 2 belongs to a natural number. If you will take the value of f2, this will be 1 upon 2, and I am telling you 1 upon 2 is not a natural number. Therefore, reality is not true. Whenever you will replace domain R asterisk with natural number, then reality is not true. In this way, you can solve question number, you can write it, therefore reality is not true. You can solve question number 1. Now come to the point, question number 2. अब देखिए ये यहाँ पर question number 2 में क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स. देखिए फंक्शन में मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, टुडे आल्सो आई एम टेलिंग यू. देखिए सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, आपकी स्क्रीन पर देखिए अगर आ रहा है तो देखिएगा. इन सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, check the injectivity and surjectivity in the following function. अब देखिए अलग अलग फंक्शन, देखिए फंक्शन सेम है, यहां पर 3 पार्ट्स है, मैं आपको बता रहा हूं. देखिए हमारी बुक में 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज गिवन, f such that n tends to n for natural number, और यहां पर कितना गिवन है, f of x is equal to x square. सेकंड पार्ट में व्हाट इज गिवन, f such that z tends to z, और उसमें क्या है, f of x is equal to x square. थर्ड पार्ट में भी सेम फंक्शन है, f of x is equal to x square, बट यहां पर क्या है कि जो डोमेन है वो रियल नंबर है और रेंज भी क्या है, रियल नंबर है. मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट देखिएगा क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट गिवन हियर, f such that n tends to n and f of x is equal to x square. अगर इसी में मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, f such that, देखिए सेकंड पार्ट में व्हाट इज गिवन हियर, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है f such that z tends to z and you know f of x is equal to x square. अब दोनों ही केसेस में देखिए एक अभी केस और है थर्ड वाला, थर्ड पार्ट आपका सिर्फ यहां पर क्या है, रियल नंबर है और यहां पर भी क्या है, रियल नंबर. अब आप खुद देखिए बेटा ये कि यू वांट टू चेक सपोज इंजेक्टिविटी, मींस आई एम राइटिंग हियर टू चेक इंजेक्टिविटी. इंजेक्टिविटी मींस यू ऑलरेडी नो स्टूडेंट 1 1 फंक्शन. अगर आप चेक कर रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यू कैन राइट हियर स्टूडेंट. पहले मैं एक नंबर से एग्जांपल दे रहा हूं. देखिए एक्चुअली f of x is equal to x square, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर. देखिए 1,2 belongs to a natural number. You will take the value of f of 1, ये कितना हो जाएगा, 1 square, that is 1. f of 2 is equal to 2 square, that is 4. अब यहां पर क्या हैपन हो रहा है, since distinct elements, you can write here student, distinct elements in the domain, distinct elements in the domain
have distinct images, have distinct images in the codomain, images in the codomain. Therefore, you can write here f is 1 1. Again, I'm repeating. Students, 1, 2 belongs to a natural number. The value of f of 1, 1 square, 1. f of 2, 2 square, that is, 4. तो यहां पर क्या मैंने ऑब्जर्व किया? I observe that distinct elements in the domain having distinct images in the codomain, therefore f is 1 1. यही चीज अगर हम सेकंड पार्ट में चेक कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है? देखिए, टू चेक इंजेक्टिविटी, सेकंड पार्ट में अगर आप चेक करेंगे इंजेक्टिविटी, तो इंजेक्टिविटी के केस में क्या हैपन हो रहा है? -1, 1 बिलोंग्स टू z. देखिए, -1 भी इंटीजर है और 1 भी आपका इंटीजर है. -1 and 1 both are integers. f of x is equal to x square. You can take the value of f -1, that is -1 square. It means 1. You can take the value of f1, 1 square, that is 1. You can write here, since -1 and 1 have same image 1, same image, 1. Therefore, f is not, you can say, spread, 1 1. Without any hesitation, you can say. अब आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है. Now, students, exercise 1.2 and question number 3. What is question number 3? Student, question number 3 is here. देखिए, question number 3 is f such that r tends to r, f of x is equal to greatest integer function x. देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है? f of x is equal to greatest integer function x. You already know. देखिए, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले what is graph of greatest integer function, this you will check. I want to draw a graph of greatest integer function. I will draw in this way. जैसे suppose this is your x-axis and this is your y-axis. Student, this is origin 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. You can write here 1, 2, 3, 4, -1, -2. देखिए, how will you draw the graph of a greatest integer function? होता क्या है? देखिए, जैसे 0 से लेकर 0 to 0.99, any value you will take, 0 will come. 1 to 1.999, any value you will take except 2. चाहे आपका देखिए 0.1 हो या 0.2 हो या 0.9 हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी. सिमिलरली स्टूडेंट, चाहे आपका 1.1 हो, 1 हो, 1.2 हो या 1.99 हो, कुछ भी हो, वैल्यू आपकी कितनी होगी? 1 ही होगी. ऐसे 2 से लेकर, देखिए, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू स्टूडेंट, 2 to 2.999 वैल्यू विल कम 2. ऐसे ही नेगेटिव नंबर के केस में जाएंगे तो व्हाट इज द रेंज ऑफ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? नेम में ही छिपा हुआ है. द रेंज ऑफ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज इंटीजर. तो इसलिए हमें क्या करना है कि अगर हमें चेक करना है इंजेक्टिविटी, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यू कैन राइट हियर स्टूडेंट, टू चेक 1 1, to check 1 1 function. What we'll do here, since 1.1 and 1.9 belongs to our set of real numbers, then what will be the value of f 1.1? Greatest integer function 1.1, that is what will come here? 1.
whenever you will take the value of 1.9, greatest integer function 1.9, that is 1. Here, students, we observe that the image of 1.1, 1.2, 1.9 is same 1. Means, student, since the image of 1.1 and 1.9 is same, therefore you can write here f is not, without any hesitation you can say 1 1. f is not 1 1, क्योंकि यहाँ पर 1.1 और 1.2 1.9 जितनी भी वैल्यूज है सभी की इमेज 1 है। ऐसे अगर हम एग्जांपल देना चाहेंगे तो 2.1 2 2.3 2.99 इमेज ऑफ ऑल इज 2। तो अगर कई एलिमेंट्स की डोमेन में सेम इमेज होती है तो यू कैन से इट इज मैनी वन, इट इज नॉट 1 1। सिमिलरली इफ यू वांट टू चेक ऑन टू तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, टू चेक ऑन टू फंक्शन। whenever you will write this तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए to check on to function means student what we'll do here, you can write here since all elements in the codomain, all elements in the codomain have no pre-image in the domain, have no pre-image in the domain, have no pre-image in the domain, therefore you can say, अब देखिए all elements in the codomain have no pre-image in the domain, therefore student f is not onto। अब उसकी वजह क्या है, all elements in the, देखिए जो आपका साफ साफ लिखा all elements in the codomain have no pre-image in the domain because region also can write here, because range of greatest integer function is an integer, you can say integer। तो जो रेंज क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ओनली इंटीजर है, therefore you can say therefore f is not, you can say onto। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करनी है तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल देंगे, सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन have no distinct images in the codomain, therefore f is not 1 1। In case of subjectivity, all the elements in the codomain having no pre-image in the domain, because we know that range of greatest integer function is an integer। मतलब आपका जो कोडोमेन है उसमें 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, इन सभी की प्री इमेज डोमेन में नहीं होगी, इसलिए मैंने लिखा है since all the elements in the codomain having no pre-image in the domain। अगर pre-image डोमेन में नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो क्या होगा, onto नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 हियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हियर आपका एनसीईआरटी का ही देखिए, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f such that r tends to r given by f of x is equal to modulus x, f of x is equal to modulus x। तो आपको इसमें भी क्या करना है कि the given function is neither 1 1 nor onto, means in question number 4 NCERT what is given, f such that r tends to r, f of x is equal to modulus x। तो अब देखिए मॉडुलस फंक्शन के केस में भी सेम टू सेम रीजन आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू कैन राइट हियर स्टूडेंट टू चेक इंजेक्टिविटी, यू कैन राइट हियर आल्सो टू चेक इंजेक्टिविटी
what will write here? Since -1, 1 belongs to real number. देखिए, अगर हमें इंजेक्टिविटी चेक करनी है तो वी ऑब्जर्व दैट -1 और 1 दोनों ही आपके क्या है? रियल नंबर्स है। अब देखिए यहां पर क्या है, whenever you will take the value of f minus 1, then modulus minus 1 is equal to plus 1. Whenever you will take the value of f1, it means modulus 1 is equal to 1. Finally, you can write here, since -1 and 1 have same image 1, have same image, 1, -1 and 1 have same image 1, therefore you can say f is not 1 1, f is not, you can say 1 1. एक्चुअली जो मॉडुलस फंक्शन है उस केस में भी देखिए आपका क्या नजर आ रहा है, -1 और 1 दोनों ही रियल नंबर है, बट द वैल्यू ऑफ f -1 इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ f1 इज आल्सो 1. तो ये क्या नहीं है, देखिए इट इज नॉट 1 1. अब ऐसे ही अगर हम लिखेंगे, यू कैन राइट हियर स्टूडेंट, टू चेक सर्जेक्शन और यू कैन से सब्जेक्टिविटी. अगर आपको सब्जेक्टिविटी चेक करनी है तो इस केस में भी देखिएगा, यू कैन राइट हियर, सिंस ऑल एलिमेंट्स इन द कोडोमेन have no pre-image in the domain, have no pre-image in the domain, because region also can write here students, because range of a modulus function is positive real numbers. Students, positive real numbers. तो देखिए जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो भी नेगेटिव नंबर्स कोडोमेन में है, जैसे कोडोमेन में भी देखिए आपका क्या लिखा R, तो उसमें -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, डॉट डॉट सो ऑन, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे. लेकिन होता क्या है, जब हम कोई भी रियल नंबर इस मॉडुलस फंक्शन में लेंगे नेगेटिव नंबर्स, तो आउटपुट विल कम ऑलवेज पॉजिटिव. Actually, range of a modulus function is a positive real number. Therefore, you can say all elements in the codomain having no pre-image in the domain. Therefore, it is not onto. So you can write here. Therefore, you can write f is not, you can say onto. So in this way, you can check onto also. After this, again, come to the point. Question number 5. What is question number 5 here? Question number 5 here, student, which function? Signum function. तो signum function के केस में क्या है, in कोई केस of question number 5, f such that r tends to r, and student, f of x function, what is given? f of x is equal to modulus x upon x, जिसकी आपकी 3 वैल्यूज निकल के आती हैं. देखिए आपकी बुक में जो क्वेश्चन है सिग्नम फंक्शन का, उसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा और एडवांस लिख दिया है, f of x is equal to modulus x upon x. After this, what is given here? 1 if x greater than 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x less than 0. This is a definition of, अब देखिए सीधी सी बात है, सिग्नम फंक्शन के केस में भी क्या हो रहा है, आप नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर मींस फ्रॉम -infinity to +infinity, all values you will take. But what is definition? Whenever you will take any positive real number, then range what will come here? 1. Whenever you will take x 0, then 0. And whenever you will take negative number x less than 0, it means negative numbers. What will come here? -1. मतलब ये जो सिग्नम फंक्शन है उसकी रेंज केवल 3 नंबर्स ही होते हैं, -1, 0 एंड 1.
तो सारे जो एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के उन सभी की प्री इमेज डोमेन में नहीं है, इट मींस इट इज नॉट ऑन टू। और वन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो देखिए सीधी सी बात है, ये आपका आता कहां से है भाई, इसे देखिएगा, यू कैन राइट हियर टू चेक sorry, to check one function, to check one function you can take any positive number, student 1 comma 2 belongs to R, the value of f1 1 is greater than 0, it means what will come here 1, whenever you will take f2 then also 1, किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप लीजिए, आप 1 लाख ले लीजिएगा, 1 करोड़ यू कैन टेक, देन ऑल्सो कितना आएगा, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आप लेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। लेकिन जब कोई नेगेटिव नंबर लेंगे तो भी क्या आएगी, -1 आएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सिंस 1 and 2 have same image 1, therefore ये भी लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं चाहता हूं तो रीजन क्या लिख सकता था, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, सिंस ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हैविंग सेम इमेज 1, therefore f is not, you can say 1 अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं be observe that all positive real numbers, all positive real numbers in the domain have same image 1, ये भी हम कह सकते थे, be observe that all positive real numbers in the domain have same image 1, therefore how can we say that it is 1 not possible, you can say it is not 1 ऐसे ही देखिए, if you want to check you can write here to check surjection, or you can say surjectivity, to check surjectivity you can write here friend, same to same statement you can write in all questions, we know that all elements in the codomain have no pre-image in the domain because range of a signum function is how much, -1 0 and 1, तो जो सिग्नम फंक्शन है उसकी रेंज केवल 3 नंबर होते हैं, -1 0 and 1, तो जब 3 ही नंबर होते हैं तो जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं उन सब की रेंज 1 हो गई, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स की इमेज कितनी हो गई, -1, तो जो बाकी जो हमारे नंबर्स होंगे इन कोडोमेन में -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, अदर भी होंगे, they have no pre-image in the domain, therefore you can say f is not, you can say student onto, तो ये in this case you can say it is not onto। now student come to the point, अब अगला जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 here, 6 थोड़ा इजी है, I hope you can understand better from in your NCERT book, what is question number 6 here, let a equal to student in question number 6, please check here, question number 6 here, set a is equal to 1, 2, 3 and set b is equal to 4, 5, 6, 7 and relation f is equal to student here given 1, 4, 2, 5, 3, you can write here 6। देखिए सीधी सी बात है, अगर हम इसका डायग्राम बना रहे हैं तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा।
कि आपको इसमें क्या चेक करना है कि show that the given function is 1 1. How will you check? You know what we'll do here? You can draw a diagram. This side तो आप लिखेंगे domain. Domain given here, you know, A. This side you should write here codomain. Codomain what is given here? B. 1, 2, 3. देखिए the end codomain 1, 2, 3, 4. The image of 1 is 1. The image of 2 is 2. And the image of 3 is 3 under F. But this 4 have no free image in the domain. तो आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट? देखिए सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, the value of f1 is 4, the value of f2 is 5, the value of f3 is 6. You can write here since different elements in the domain, different elements in the domain have different images in the codomain. Different images in the codomain. Different images in the codomain. Therefore, you can say f is 1 1. ये देखिए सीधी सी बात है, इस एग्जांपल से एक चीज क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू के ना होने की वजह क्या है? मेन रीजन बिहाइंड दिस, इट द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू बिकॉज दिस 4 हैव नो प्री इमेज इन द डोमेन। इस 4 की प्री इमेज नहीं है, सो दैट यू कैन से द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। लेकिन हमें इसमें यही प्रूव करना था, द गिवन फंक्शन इज 1 1. यू कैन से इजिली सिंस distinct elements in the domain have distinct images in the codomain, therefore f is 1 1. Okay, now come to the point, question number 7 here. What is question number 7? In question number 7 is friends, two parts given, part first given and part second given. Part first what is given? देखिए here given, in each of the following cases state whether the function is 1 1 onto or bijection. This you will check. Question number 7, part first given. F such that R tends to R, and here what is given? F of x is equal to 3 minus 4x. This given. अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या 1 1 नहीं है। You will check here injectivity and surjectivity. What we'll do here? You can write first of all you can write this heading to check injectivity. You can write here to check injectivity. First of all, you can take two arbitrary elements x and y. In the domain, you can write let x comma y belongs to domain R. Therefore, you can write f of x is equal to f of y. Friends, what is the function? In this question, given function is 3 minus 4x. Therefore, fx is equal to 3 minus 4x. And here you can write 3 minus 4y. 3 cancel. Minus 4x is equal to minus 4y. This implies x is equal to y. Finally, you can write here since f of x is equal to f of y, this implies x is equal to y. Therefore, you can say f is 1 1. Without any hesitation, you can say the given function is, again I'm repeating, 1 1. कुछ भी नहीं करना होता है कि only and only you can take two arbitrary elements in the domain. And after say x comma y, after this you can write f of x is equal to f of y, and you can put the value of f of x and f of y as per the given condition in the equation. And after this, whenever you will simplify, after simplifying, if x is equal to y coming, without any hesitation you can write the given function is 1 1. After this, when to check surjectivity, you can write here to check surjectivity.
to check subjectivity, then what will write here? You can write here, friends, let f of x is equal to y. मैंने आपको इससे पहले बताया था, whenever you want to check subjectivity, you should write f of x is equal to y. The value of f of x is equal to 3 minus 4x is equal to y. 4x is equal to 3 minus y. X is equal to 3 minus y upon 4. And students, without any hesitation, you can write here r. अगर ये नेचुरल नंबर होता तो हम लोग ये कहते हैं कि द गिवन फंक्शन, द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्योंकि नेचुरल नंबर तो होता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, r है. यू कैन राइट हियर that we can also, if you want, you can give, since all the elements in the codomain having preimage in the domain, therefore f is onto. Here you can write therefore f is onto. I hope you can understand this question. अगर 1 1 and onto check करना है, then now student come to the point, part second given. Second part, what is given, student? Second part of this question is given here. Second part of this question is here, student. Question number 7, part second. F such that r tends to r, f of x is equal to 1 plus, you can write here x square. This given. F of x is equal to 1 plus x square. You should write here, student, to check injectivity. That heading very, very important, very common also. To check injectivity. What will write here, student? To check injectivity, let f of x is equal to f of y. And after this, friend, you should write here 1 plus x square is equal to 1 plus y square. Okay? देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है, आप ऐसा ना करना, आप लोग क्या करना, थोड़ा सा लिख लेना, क्योंकि डोमेन शो करेंगे तो टीचर्स पूरे मार्क्स देगा. You can take two arbitrary elements x, y belongs to range, domain R. And after this, you can write here, since f of x is equal to f of y. And after this, you can put the value of f of x and f of y. The value of f of x, 1 plus x square is equal to 1 plus y square. This one cancel. X square is equal to y square. अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी. What we'll do here, you can transpose this y square to left hand side. It means x square minus y square is equal to 0. X plus y into x minus y is equal to 0. This implies x is equal to plus minus y. You know, friend, x is equal to 1 time plus y coming and second time minus y coming. और ये देखिए क्या कर रहा है, this belongs to R also. इसका मतलब क्या है, therefore you can say f is not 1 1. आप ये कह सकते हैं f is not 1 1. कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये इसमें कैसे हो गया. अगर ये नेचुरल नंबर होता तो x इज इक्वल टू y ही केवल हम लिखते हैं, क्योंकि x कैन नॉट बी माइनस y. अगर आपको जैसे ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो यू कैन टेक टू नंबर्स. जैसे आपने सपोज कर लिया -1, -1. -1, 1 belongs to R. You can take the value of f -1. It means 1 plus -1 whole square. 1 plus 1, that is 2. After this, you can take the value of f1. 1 plus 1 square, it means 1 plus 1 is equal to 2. Since -1 and 1 have same image, you can say, 2. -1 and 1 have same image 2. Therefore, you can say f is not, you can say 1 1. और मैंने पहले ही कहा था कि ये देखिए 1 1 नहीं है. अगर आपके पास दो मेथड है, या तो ऐसे सॉल्व करें या आप ऐसे सॉल्व करें, दोनों ही मेथड में आपको क्या होगा, इक्वल मार्क्स मिलेंगे. अगर आप ऐसे सॉल्व करते हैं देन आल्सो सेम मार्क्स. इफ यू गिविंग दिस एग्जांपल देन आल्सो सेम मार्क्स टू चेक इंजेक्टिविटी. आफ्टर दिस फ्रेंड, व्हाट विल डू हियर, यू कैन चेक सब्जेक्टिविटी. आफ्टर दिस, टू चेक सब्जेक्टिविटी, व्हाट विल डू, ऑलरेडी मैंने बताया था कि क्या करेंगे आप, you should write f of x is equal to y.
you can write here student to check surjectivity. To check surjectivity, let f of x is equal to y. This you will write. ये तो मैंने पहले बताया था. To check surjectivity, f of x is equal to y. You can put the value of f of x 1 plus x square is equal to y. X square is equal to y minus 1. X is equal to under root y minus 1. देखिए सीधी सी बात है, ये क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 1. क्या ये ऑन टू होगा? देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, कभी भी हो, तो आपको कभी भी रिस्क नहीं लेनी है. हर जगह क्या करना है, ये देखना है. सबसे पहले कभी भी आपको सब्जेक्टिविटी स्टूडेंट चेक करनी है, तो यू शुड राइट फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x इज इक्वल टू वाई. मैंने पहले बताया था. एंड आफ्टर दिस you can put the value of f of x. जैसे कि यहाँ पर वैल्यू कितनी है f of x 1 plus x square equal to y. You can find the value of f of x. कितना है देखिए आपका f of x? आपका वहाँ पर f of x है 1 plus x square is equal to y. Whenever you will transfer this 1 to right hand side, y minus 1 or x square is equal to under root what is coming here? y minus 1. तो सीधी सीधी बात है, ये क्या है देखिए, ये जो under root y minus 1 है, तो ये मतलब क्या है कि दिस इज नॉट बिलोंग टू दैट, मतलब आपका जो आर, ये क्या है, आर को बिलोंग नहीं कर रहा है. therefore it is not on to. आप यहाँ पर विदाउट एनी हेजिटेशन कैन से द गिवन फंक्शन इज नॉट on to. ये 1 तो है. देखिए इससे पहले मैंने कहा था, जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था 1 on to. सेकेंड पार्ट नीदर 1 नॉर on to. यू कैन राइट हियर therefore f is not onto. तो सीधी सी बात है. देखिए 7th क्वेश्चन में मैं यहां पर फिर से बता रहा हूं, सेकंड पार्ट में ना तो ये 1 है, ना ही ये क्या है onto है. रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि यहाँ पर f such that कितना है r tends to r है. तो अब सीधी सी बात है, देखिए यहाँ पर अब लिख देना बेटा, ये मैं शायद यहाँ लिखना भूल गया, does not belong to r. तो कभी कभी ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं. अब यहाँ पर सॉरी क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे ही हटेंगे प्लस माइनस आ जाएगा, दोनों ही नेगेटिव भी होगा और माइनस भी होगा. इसी वजह से क्या है, ये ऑन टू नहीं है. अब जैसे यहाँ पर देखिए केस है क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, उसमें आपको चेक करना है कि क्या ये बाइजेक्टिव है या नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, कितना इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, let capital A and capital B be two sets. Show that f such that A cross B tends to B cross A such that f of A comma B is equal to B comma A. Here ordered pair given. Means student domain in question number 8 में आप अगर देखोगे f A comma B is equal to what is given here? B comma A. और यहाँ पर क्या given है? f such that Cartesian product of A and B tends to, you can write here Cartesian product of B and A. अब जब ये Cartesian product था, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन होगा, ordered pair गिवन होंगे. What is meaning of this? f of A is equal to B and f of B is equal to what is given here, A. अगर आप f of A की वैल्यू लेंगे यहाँ पर, f A की वैल्यू B हो जाएगी, और f of B की जो वैल्यू होगी that will be B. मतलब f of A की वैल्यू B है और f of B की वैल्यू A है. You can write here since different elements, you can write different elements in the domain, elements in the domain have different images in the codomain, different images in the codomain, different images in the codomain. Therefore you can write here f is 1 ये आपको थोड़ा सा चेक करना था कि 1 है या नहीं है. अब आप खुद ही बेटा देखिएगा, अगर आप यहाँ पर थोड़ा लिखना चाह रहे हो, मींस टू चेक इंजेक्टिविटी, आपने चेक कर लिया, और इसके बाद भी यहाँ पर फिर से आप लिख देंगे सिंस all elements in the codomain, all elements in the codomain have pre-image in the domain, have pre-image
in the domain have pre-image in the domain, therefore you can write here f is onto। देखिए ये सीधी सीधी बात लिखी हुई है, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन है उनकी इमेजेस भी कोडोमेन में डिफरेंट डिफरेंट हैं, एंड वी ऑब्जर्व दैट all elements in the codomain have pre-image in the domain, therefore it is onto। अब देखिए सीधी सी बात है, you can write here since f is one and onto, one and onto, therefore you can say f is bijective function, f is bijective, f is bijective। This you can write, actually the given function is one and onto, therefore you can say the given function is bijective। क्वेश्चन में 8 is also very easy। देखिए क्वेश्चंस जो है बहुत इजी हैं, if you will try then you can understand, otherwise you can face problem also। Okay student, now question number here 9 what is given? Question number 9 is given here student, you can read carefully। now I am solving question number 9। तो what is question number 9 student? देखिए in your NCERT book given, let f such that n tends to n defined by f of n is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd, n by 2 whenever n is even। means first of all what is given, f such that n tends to n and f of n is equal to n plus 1 upon 2 when n is odd। जब आपका n कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, तो f ऑफ n की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, n plus 1 upon 2 whenever n is even then n by 2। means students when n is even, जब आपका n even है for every all small n belongs to capital N। तो यहां पर आपको क्या करना है, स्टेट वेदर द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्शन। ये बाइजेक्शन है या नहीं है। बाइजेक्शन का मतलब सीधा सीधा होता है whenever any function is one and onto, again I'm repeating, whenever any function is one and onto, you can say given function is bijective। you know, first of all if you want to check here, you know, injectivity, you can write here to check injectivity, to check injectivity, first of all you can take the value of f1, 1 which type number, देखिए you already know 1 is a odd number, it means n plus 1 upon 2, अगर odd है you can put the value here, 1 plus 1 upon 2 it means 2 upon 2, you can write here 1। after this f2, 2 is a you know even number, अगर even है तो आपको n by 2 लेना है, 2 upon 2 that is 1। और आप देखिएगा ऑलरेडी आपको पता है कि 1, 2 belongs to natural number। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक तो मैंने odd number ले लिया, सेकंड मैंने कौन सा ले लिया, even number। this 1 and 2 belongs to natural number n। whenever you are finding the value of f of 1, तो जब आपका f n odd number है तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है n plus 1 upon 2, means you will put instead of an n 1 plus 1 upon 2, 2 upon 2 that is 1। whenever n is even you should write here f2, 2 upon 2 that is 1। after this you can write here since 1 and 2 have same image, you know 1, therefore you can say f is not 1 1। ये जो f है वो कैसा नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। अब ऐसे ही देखिए आप क्या दिखिएगा, f3 की वैल्यू फाइंड करिएगा, अगर आप f3 लोगे तो 3 plus 1 upon 2 2 आएगा, f4 you will take then 4 upon 2 2। लेकिन हम जैसे बढ़ते जाएंगे all elements in the codomain having same image in the domain, इसमें देखिए क्या दिखने पड़ रहा है, to check surjectivity, you should write here be observe that all elements in the codomain
all elements in the codomain have pre-image have pre-image in the domain, pre-image in the domain. Therefore you can write here f is onto, ये जो f है वो कैसा फंक्शन होगा आपका, onto फंक्शन होगा। फिर से मैं बता रहा हूं ये वन वन नहीं है लेकिन ये onto है, क्योंकि जो आपका कोडोमेन है उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे नेचुरल नंबर्स के, वो अगर हम इनफाइनाइट तक जाएंगे तो उनकी क्या होगी, प्री इमेज बन जाएगी। लेकिन हमें वहां तक जाना होगा कि नहीं जाना होगा, आई डोंट नो। ओके, तो ये फंक्शन बाइजेक्शन तो नहीं है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, ये वन वन तो है, ये सॉरी ये ऑन टू तो है, बट इट इज नॉट वन वन, देयरफॉर इट इज नॉट बाइजेक्टिव। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज गिवन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.2। इसके बाद में आपकी 2 मोर क्वेश्चंस है, लेकिन वो एमसीक्यू है, वो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन हियर स्टूडेंट इन योर एनसीईआरटी बुक, let A is equal to R difference 3 and B equal to R difference 1. Consider the function f such that it tends to V defined by the function, देखिए क्वेश्चन नंबर here 10, f such that A tends to B defined by the function f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3. अब देखिए सीधी सी बात लिखी हुई है, a मीन्स r डिफरेंस 3, b मीन्स r डिफरेंस 2, ये भी देखिए गिवन है। यू वांट टू चेक हियर द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, हाउ विल यू चेक, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। टू चेक यू शुड राइट हियर स्टूडेंट, टू चेक इंजेक्टिविटी you should write first of all, to check injectivity, let x, y belongs to domain A. सपोज कर लेते हैं कि जो आपका x और y है ये डोमेन A को बिलोंग कर रहा है। इट मींस स्टूडेंट हियर f of x is equal to f of y, it means स्टूडेंट हियर x minus 2 upon x minus 3 is equal to y minus 2 upon y minus 3. ये मैंने पहले बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल you can take two arbitrary elements in the domain, say x comma y. After this you should write f of x is equal to f of y, or already you know f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3. It is obvious that the value of fy must be y minus 2 upon y minus 3. Therefore this implies x minus 2 into y minus 3 is equal to x minus 3 into y minus 2. This implies xy minus 3x minus 2y plus 6 is equal to xy minus 2x minus 3y plus 6. Whenever you simplify xy cancel, 6 cancel, minus 3x plus 2x is equal to minus 3y plus 2y. This implies minus x is equal to minus y. This implies x is equal to y. Since f of x is equal to f of y, this implies x is equal to y. You can say f is 1 1. देखिए without any hesitation you can prove the given function is 1 1. कुछ भी मैंने नहीं किया। First of all, you can take two arbitrary elements in the domain, say x comma y. After this, you should write f of x is equal to f of y. Put the value of f of x and f of y. Whenever you will cross multiply, means after solving here, x is equal to y coming. Therefore, you can say the given function is 1 1. After this, friend, you want to check subjectivity. What will write here? You can write here, friend, to check subjectivity. To check subjectivity, then what will do here, friend? You can write here, मैंने पहले बताया था, let you can write here f of x is equal to y. F of x is equal to y. Therefore, x minus 2 upon x minus 3 is equal to y. This implies
x minus 2 is equal to xy minus 3y. This xy you can take to left hand side. X minus xy is equal to 2 minus 3y. After this, x you can take common. X into 1 minus y is equal to 2 minus 3y. X is equal to 2 minus 3y upon 1 minus y. This belongs to A. क्या ये रॉन्ग है, करेक्ट है? प्लीज चेक हियर स्टूडेंट्स. देखिए जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x minus 2 is equal to xy minus 3y. This you can transpose to left hand side. तो this coming, और ये किसको बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट? This belongs to डोमेन. अब सीधी सी बात है, ये कैसा हो जाएगा? Therefore you can write here f is onto. सीधी सी बात है, since all the elements in the codomain having pre-image in the domain, therefore you can say it is onto. वैसे भी हम कर सकते थे, लेकिन मैंने उसको नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे भी सॉल्व करना चाहिए. स्टूडेंट 30% सिलेबस ऑलरेडी डिलीटेड बाय द CBSE बोर्ड, so that next exercise is not in the syllabus. 1.3 and 1.4 are not in the syllabus, but student 1.3 is also very easy. What is given in 1.3? The given function is invertible. I am telling you, whenever any function is 1 and onto, it means invertible. बस थोड़ा सा आपका और फर्क पड़ जाता. देखिए, any function is 1 and onto, then invertible. आपको क्या करना पड़ता? f of x is equal to y. This implies x is equal to f inverse y. तो ये invertible पे करना था. Means student, आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करनी थी और वो इनवर्स, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है. बाइनरी ऑपरेशंस इज आल्सो इज नॉट इन योर सिलेबस. तो एक्सरसाइज 1.1 1.2 completed by me. After this I will start your chapter inverse trigonometric functions. Thank you.